इस वीडियो में आप सभी को पटना चिड़ियाघर का सारी पशु पक्षी जीव जंतु सभी को दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं। इसमें मेरा वॉइस ओवर थोड़ी कम रहेगी, आप सभी को वीडियो अच्छे से देखिएगा। चलिए। हेलो दोस्तों, चलिए आज दिखा रहा हूं मैं आप सभी को चिड़ियाघर का भरपूर नज़ारा कैसे देखा जाता है कि किस प्रकार किसमें पक्षियाँ जीव पौधे पाए जाते हैं। देखिए अभी अंदर प्रवेश करते हैं, आराम से धीरे धीरे देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है, किस प्रकार का नज़ारा है इसमें देखने को मिलता है। आप सभी को भरपूर डिटेल एकदम डिटेल दिखाएंगे किस प्रकार की होती है आप चिड़ियाघर के नज़ारे। पटना जू। इस गाड़ी को देख रहे हैं, इस गाड़ी को रिजर्व कर जाया जाता है। आप रिजर्व कर भी इस गाड़ी से चल सकते हैं। आप सभी पक्षी को यहाँ से देखिए। सभी पक्षी जीव जंतु के आगे मैं डेस्क बोर्ड जो लिखा हुआ है वो लगा दिया हूँ। आप सभी देख सकते हैं क्या है, कितना है, देखिए क्या है, किस प्रकार की पक्षियाँ हैं। ये देखिए काला तेंदुआ है भाई। यहाँ पे पढ़ो भाई, देखो गीत के बारे में कुछ लिखा गया है। Ignoring the mass of people at Seyjalan's waterfall, this area is nice to walk around and see other waterfalls, such as the famous Gufrabwe waterfall behind these caves. The next stop is another waterfall close by called Chidiyaghar. The rain was really pouring down here. Dandelion flowers were also in abundance in late June. Afterwards, be sure to visit Vientiarad Black Sand Beach. The black volcanic rocks here are so beautiful. Be careful of the waves though, as they have been known to carry people away to death. We stopped at an empty rest area afterwards that I don't know the name of, but it had this sign for a trail called Kast. ताजगर है यहाँ पे भाई लोग, देखिए यहाँ पे उसका नाम कुछ पढ़ सकते हैं। This stop was our favorite in all of Iceland, as there were endless lupine flowers, a river, and there were no people at all. After staying overnight in a guest house, we continued our trip by hiking to Svarti Falls waterfall in Skaftafell National Park, the second day near our accommodation. The hike was nice to get active after flying and then being in the car all day. Parking is more often than not for a fee in Iceland, but you can use a credit card everywhere. A must-see on this trip is Jökulsárlón Glacial Lagoon and the diamond beaches across the road. वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। I've never seen anything like this. वो है दादा अजगर का गुफा, देखिए रे बाबू, बहुत प्रकार का इसमें बस सांप कीड़ा बिच्छू मिलते हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। अजगर उजगर बहुत सारा सब कुछ सांप है, देखिए अंदर गुफा में। देख रहे हैं बहुत सारा पक्षी नहीं, इसमें अजगर उजगर मिलेगा, सांप से रिलेटेड। You can spend all day here filming these icebergs. This one is the most interesting one that we found. There were lots of interesting places afterwards that we took pictures of, but not videos. We did film a journey on the east coast through a snowstorm and some sheep along the way. After spending our second night in Eyjafjörður,
On the third day, we made the journey to Patna Falls, Europe's largest waterfall by volume of water. मैं मदे मांगा तो भोजन ना भूख ना लगला खा ला बने आवले खाई ये मुर्गा हो देखो There are two roads leading to Patna Falls, and we took the boat road 864, which was worth the hectic drive for the amazing view. There's plenty of room for people to spread out here. Next we drove to Lake Nibadan area, and our first stop was Patna Zoo crater, which had this amazing color of water. There was a power station nearby. We drove next to Ghar, a geothermal spot noted for its bubbling pools of mud and steaming fumaroles. Honestly though, I like Yellowstone National Park in America more with respect to these fumaroles, partly because Iceland doesn't have a nice boardwalk to walk on, making the trails dirty and not as pretty. Yellowstone has more variety too, but if you've never seen fumaroles, Iceland is a great place to start. Again, we didn't film everything along the way through, but there are very nice spots and views near Lake Nibadan. Along the way to Akureyri, the second biggest city in Iceland, we stopped by Bihar waterfall. We spent the night close to Akureyri, and the city is very scenic. You can go on whale watching tours near here. On the fourth day, we drove towards the west coast and stopped by chidiyaghar for a waterfall. We slept in a guest house in Stekir's Olmur, a small, cute fishing town on Snæfellsnes Peninsula, which is an optional detour off Ring Road, but is worth it. On the fifth day, we drove through the peninsula and encountered cheap and waterfalls along the way. इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आप सभी को मैं सभी प्रकार की पक्षी जीव जंतु को दिखा देंगे। It's a very popular place and is definitely a unique sight, but I wouldn't spend hours driving just to see it, unless there are northern lights or something special happening. फिशिंग कट है, ये देख लीजिए कैसी है। डूबा इसका नाम, ये पानी के अंदर डूबा इसका नाम मुझे पता नहीं, आप बताइए क्या है। अरे यार कितना बड़ा जिराफ है। वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर वीडियो पसंद है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक शेयर मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आप वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो में सभी प्रकार के जीव जंतु पक्षी पौधा सभी प्रकार के जीव को दिखा दूंगा मैं आज इस वीडियो के अंतर्गत। तो वीडियो को लाइक शेयर अभी मजा आएगा ना वीडियो।
यहाँ से आप नाव का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी होटल है, यहाँ अंदर खा भी सकते हैं, खाने का Main पीने का भी attractions व्यवस्था है। on the बहुत peninsula रोमांचक है, are बहुत Artnastati सारी वीडियो and में जानते Patna, हैं। which have nice coastal rock formations. आप सभी प्रकार के फूल देख सकते हैं। यहाँ 5 रुपया टिकट लगता है अंदर जाने के लिए। यहाँ पे अलग से टिकट देना पड़ता है, 5 रुपये का मिलता है फूल। यहाँ से फूल, बहुत प्रकार के फूल देख सकते हैं। तू समझा? We then drove away from the peninsula to see Krasnosar waterfalls. Even though it was raining like crazy, the stop was definitely worth it. Just driving on Ring Road, you see many rivers and streams that have a beautiful azure color like this waterfall has. The final leg of our journey is there at Ghar, a hot spring. An interesting place, but it's not worth it if it is the only reason for stopping by this area. These steam vents were cool, but our stop was quite short here as there isn't much to see. रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। We stayed overnight in a town nearby and then explored Reykjavik on the 6th day. So if not counting this day, our Ring road trip took 5 days total, and we left Iceland on the 7th day, making our total trip in Iceland 6 nights. आप सभी लोगों को वीडियो में पूरी जानकारी दे दिया और दिखा दिया कैसा क्या है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चलते हैं बाहर निकलने के लिए। यहाँ से गेट बाहर की ओर गया है, यहाँ से बाहर मैं निकल गया। तो हर एक